Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 9, that is the Maratha War of Independence. स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर, जितना क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे आपके लेसन में आपके बुक में जितना दिया गया है सारा हम देखने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब वॉज अनॉयड बाय हिज ब्रेवरी. शहजादा अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. दीज decamped with the golden pinnacle from the emperor's tent. संत जी एंड धनजी, संत जी घोरपड़े एंड विठू जी चौहान, खांदो बलाल एंड रूपा जी भोसले. सो यहाँ पे ये आपका राइट ऑप्शन है, संत जी घोरपड़े एंड विठू जी चौहान. ही फॉट वेरी ब्रेवली इन द गोवा बैटल. तो कौन, इसमें से देखो ऑप्शन जो राइट है ये है यसाजी कंक. फाइंड in the next find in the text in the lesson and write answers. Why did Sambhaji Maharaj return halfway from the Janjira campaign? Sambhaji Maharaj started a campaign against the Siddhi of Janjira in 1682 CE. The Marathas laid siege to Siddhi's Dandrapuri, battered the fort of Janjira with the artillery. C option is, but on the other hand, the Mughal army invaded Swaraj. Hence, Sambhaji Maharaj returned halfway from the Janjira campaign to defend his kingdom. Why did Sambhaji Maharaj decide to teach a lesson to the Portuguese? The Portuguese of Goa joined hands with the emperor against Sambhaji Maharaj, so the Maharaj decided to teach a lesson to the Portuguese. While going to Jinji, Raja Ram Maharaj left the responsibility to protecting Swaraj to whom? तो इसका आंसर है while going to Jinji, Raja Ram Maharaj had assigned the duty to protect Swaraj to Ram Chandra Pant, Amatya Shankar ji, Narayan Sachiv, Sant ji Ghorpade and Dhan ji Jadhav. Devdatta has described Maharaj Tarabai's valor in which words? तो ये क्वेश्चन है आपका. Devdatta has described Maharani Tarabai's valor in which words? So Devdatta has described Maharani Tarabai's values in his Marathi poem. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरीके से आपको आंसर ऐसे लिखना है. ये आंसर उसका है. तो इन्होंने ताराबाई को बहुत ही राम रानी, भद्रकाली, रणरंगी, क्रुद्ध झाली, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे उनको बताया उनके बारे में. गिव रीज़न. औरंगजेब टर्न हीज एम टुवर्ड्स आदिल शाही एंड कुतुब शाही किंगडम. सो इसका रीज़न बताना है आपका, क्यों. So because Aurangzeb was not able to succeed his campaign against the Marathas, therefore he suspended the campaign and turned his aim towards Adil Shahi and Qutub Shahi states. क्योंकि वो मराठाओं से नहीं लड़ पा रहा था, उसे पता चल गया था, तो इसलिए वो कुतुब शाही और यहाँ पे और आदिल शाही की तरफ वो रुख करता है उनको भी जीतने के लिए. After the death of Sambhaji Maharaj, the Marathas intensified their war with the Mughals. Sambhaji Maharaj was brutally put to death by Aurangzeb. संभाजी महाराज ने क्या किया था, बहुत ही क्रूअल्टी, ब्रूटली औरंगजेब ने मार दिया था, ठीक है. The Marathas took inspiration from his sacrifice and intensified their fight against the Mughal. इसीलिए यहाँ पे मराठा ने समझ लिया था उनकी सेक्रीफाइस को और मुगलों के खिलाफ हो गए थे वो लड़ने के लिए, ठीक है. It was decided that the Raigad fort should be fought under the leadership of Maharani Yesubai. आंसर देखिए. Zulfikar Khan put Raigad under siege. B. Rajaram Maharaj and his wife Maharani Tarabai, Sambhaji Maharaj's wife Maharani Yesubai and his son Shahu were in Raigad. It was very risky for all members of the royal family to stay at one place. It was decided
that Rajaram should escape from Raigad and the fight to defend Raigad would continue under the leadership of Maharani Yesubai. Find from the text and write the answer. Why took away the golden pinnacle from the emperor's own tent? Sant ji Ghorpade, Vithoji Chauhan. Name the faithful sardars of Raja Ram. पूरा एक में आएगा राजा राम, यहाँ पे गैप नहीं आएगा. महाराज हु जॉइंड हिम इन द जिंजी कैंपेन. प्रहलाद निर्जी, खांदो भल्लाल, रूपाजी भोसले, ये तीनों थे. वॉट वॉज ताराबाईज warfare method called? Tarabai's warfare method was called safe deposit locker system. How did Aurangzeb intensed many Maratha sardars on his side? Aurangzeb intensed many Maratha sides on his side by giving them watans and jagirs. वतन और जागीर मतलब ज़मीनें देख के वो लोगों को अपनी तरफ कर रहा था मराठाओं को. Why was it decided that Rajaram Maharaj should escape from Raigad and go to Jinji? The Jinji fort was far off in the south and was invincible. Second one is, it was not an easy task for the Mughals to capture this fort. Hence Rajaram escaped from Raigad and went to Jinji. Sixth one is, how does Kafi Khan described Maharani Tarabai? तो यहाँ पे देखते हैं. खैफी खान डिस्क्राइब्ड महारानी ताराबाई इन द फॉलोइंग वर्ड. शी इज़ इंटेलिजेंट एंड वाइज. शी became very famous for her management of army and administration even during the rule of her husband. When was the sign of the tilting of the balance to the other end seen? It was when trusted sardars like Krishnaji Sawant, Khande Rao Davada, Dhanji Jadhav and Nemaji Shinde started the battles on various fronts against the Mughals outside Maharashtra, which gave a sign of the tilting of the balance to the other end. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए. कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. अपने फ्रेंड साथ भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी. और उन्हें भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे.